हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ मार्च 13th करंट अफेयर्स वीडियो. Let's get started with the news articles. First one is that Telangana has scored third rank in resolving grievances. This has been published in the report of CP Grams of DARPG, that is your डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस. उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के विद इन CP ग्राम्स, दैट इज़ योर सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका फेब्रुअरी के रिपोर्ट में वी फाइंड दैट तेलंगाना हैज़ स्कोर्ड थर्ड रैंक. सबसे फास्ट क्लियरेंसेस जो ग्रीवांसेस की हुई हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिली हैं, उसके बाद मणिपुर एंड देन योर तेलंगाना. एंड तेलंगाना हैज़ सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व लॉट ऑफ केसेस लाइक 851 यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा. दैट इज इट हैज़ सिक्योर थर्ड पोजिशन इन हाइएस्ट डिस्पोजल ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, दैट इज़ योर ATR. ठीक है, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट अप वी हैव सेंटर्स व्यू पॉइंट ऑन योर सेम सेक्स मैरिजेस या होमोसेक्सुअल मैरिजेस. वो कहते हैं कि चाहे वो ना तो रिकग्नाइज्ड हैं और ना ही अनलॉफुल हैं, फिर भी हम उनको एक कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते. एंड सेंटर इज़ ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट स्पेशल स्टेटस जो हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस को मिला है वो दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ डिस्क्रिमिनेशन. सेम सेक्स मैरिजेस के डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आता है अंडर आर्टिकल 15(1), ऐसा नहीं है. सो वी डू नॉट रिकग्नाइज दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ मैरिज. इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं. एंड इन्हीं के ओपोजिशन में जो LGBTQ कम्युनिटी है उनका दावा है कि जो सेंटर है या स्टेट है आपका, उनको क्रैश कोर्स सिखाने की ज़रूरत है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर के ऊपर, क्योंकि वो क्लेम करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकिन हमको रिकग्निशन देने से कतरा रहे हैं. सो दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट, इट्स सॉर्ट ऑफ डिबेट. ठीक है, तो एट प्रेजेंट द पोजिशन इज़ दैट द सेम सेक्स मैरिजेस हैव नॉट बीन रिकग्नाइज्ड, दो दे आर लॉफुल, दे आर नॉट अनलॉफुल, बट स्टिल they are not recognized. Next up we have this you can quote in your essays. It will be a wonderful point that showing gender equality in the gaming industries also. तो पुणे बेस्ड जो एक कंपनी है सुपर गेमिंग, उन्होंने ओलंपियन शूटर हिना सिद्धू के ऊपर एक गेम बनाया है. ठीक है, सो हु इज़ शी इज़ योर 2014 फर्स्ट इंडियन पिस्टल शूटर जिनको रैंक 1 मिला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में. So when essays or your question comes on gender equality, show it in the gaming industry also. It will be a unique point. Similarly, CISF has been in news airport checks के लिए, and हमने देखा कि पहली बार NCR के आउटसाइड हैदराबाद में नीसा में आपका इसका रेजिंग डे परेड हुआ है. So in that particular parade, the women officers or personnel of CISF have showcased jumping activity, running activity, somersault activity, fire dancing etc. एंड उन्होंने कलारी पायत्तू भी किया है. सो कलारी पायत्तू इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्शल डांस ऑफ केरला. ठीक है, मोर यू कैन सर्च ऑन इट. सो दिस इज़ अबाउट CISF. सो CISF और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए. नेक्स्ट अप वी हैव दैट रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस एट जगत्याल एंड वरंगल. यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है. सो rice and mango processing units have been established in Polasa and in Warangal. चिली एंड टर्मरिक के जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं. ऑल्सो आर पैडी प्रोडक्शन स्पेशली इन नॉर्थ तेलंगाना हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली बिकॉज ऑफ द कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट. सो दिस यू कैन ऐड इन योर आंसर्स ऑल्सो एंड हैव अ जनरल ओवर पॉइंट. एंड देर इज़ अ मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट इन राजेंद्र नगर हैदराबाद. सो दीज आर ट्रिवियल फैक्ट्स अबाउट योर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज. Then we have Mallana Bonalu being celebrated. So it is celebrated at Komaravelli. इसके ऊपर और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं. So this is something related to your cultural aspect. Next up we have Basti Dawakhanas being set up in Warangal. So Warangal has been proposed to be developed as a health city. तो वहीं पे वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं. सो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट्स इन योर बस्ती दवाखानास, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट विथ द डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर MEPMA. ठीक है, और इसमें टाटा ट्रस्ट इज ऑल्सो अ पार्टनर. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
And what happens in Basti Davakhanas is they offer free consultation and diagnostics and medicines free to the people over there. Next, we have this particular article on broken rice. So there has been this have been in news, parabolic rice and this broken rice have been in news for a long time now. That 20% levy on the raw rice exports has been established, and there has been ban on export of broken rice. So what is the whole issue all about is in the Yasangi crop season, that is your Rabi season, a lot of quantity of your broken rice is being expected, लेकिन उसका export ban कर दिया गया है center के द्वारा. So state is under apprehensions about this particular fact. The center has mandated the Food Corporation of India to supply only raw rice to other like countries as exports and not any other rice. जबकि चाइना uses broken rice as raw material for making ethanol and cattle feed. So this kind of a statement can come कि broken rice can be used to make ethanol or cattle feed. Yes. Also China is the largest buyer of your Indian broken rice, लेकिन इसका बैन कर दिया गया है और 20% जो ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो लगा दी गई है इसके वेरियस ग्रेड्स के ऊपर September 2022 ऑनवर्ड. सो दिस इज द पॉइंट ओवर. Next up, we have this another point on women empowerment, that Group Captain Shaliza Dhami, she has become the first commanding officer of a missile squadron in Punjab. So this has been for the first time that in the Indian Air Force, women officer has been selected for the frontline combat unit. So this again marks something in the army field. And a very historic judgment in 2020 had come, where women were allowed into permanent commission and they could be put into the command role. So this was a very landmark judgment. You can comment below the judgment which I'm talking about here. Next up, we have a very trivial fact, that is Oymyakon in Russia is the coldest place. -70 degrees Celsius तक यहाँ पर जाता है, and Siberian people यहाँ पर रहते हैं. So this is just a trivial fact. Next up is an article on your Mariana Trench. So सबसे पहले तो उसका location, where is Mariana Trench located? In the Pacific Ocean, sure, but in the Western Pacific Ocean. So that is the key point here. Also, if we have to locate it in otherwise, it is located to the east of Mariana Islands. So that is something there. What is the deepest point of Mariana Trench? It is the Challenger Deep. Now Challenger Deep is 7,000 feet more deeper than Mount Everest. Okay, so this is the most trivial fact. तो इस तरह से statement बन के question आ सकता है. And how has these depths been measured? It is measured through the sonar mounted on the ship, that is either on the ship mounted sonar way or pressure sensor have been developed under the seabed. So these are the two methods through which such depths have been measured. Next up, we have coronal mass ejections. So these are they originate from the sunspots. That is one key point over here. And what is important for us is that the pressure through which such ejections happen in the sun's outer surface, they will affect our Earth's magnetic field because of the highly energetic particles that have been released by these coronal mass ejections. Next up, we have this Asia's largest tulip garden, which is known as Indira Gandhi Tulip Garden, also known as Siraj Bagh. And where it has been located? It has been located between the Dal Lake and the Zabarwan Hills. So the question could also be Zabarwan Hills कहाँ पर located हैं? तो वो कश्मीर में located हैं. Next, we have already spoken 2 days back about the Arogya Mahila scheme. So this particular program has been launched on Women's Day, and what happens in this particular program is that tests are conducted for women on every Tuesday in 100 health centers, and medicines are given at free of cost. So this is something, and we had also spoken about the nutrition kit. Okay, so nutrition kits भी फिर से start किए जाएंगे, and for the pregnant women after Ram Navami. So that is for a later date. Another very important point that you can write in your environment answers is about the conservation of Gomti River. So a women has been doing a sort of walk, 690-kilometer stretch walk, and it is Shipra Pathak who's doing this particular walk for the conservation of Gomti River. So Gomti River किसकी tributary है वगैरह आप ध्यान से देखिएगा. So the key word, English word for the day is this ensconce. ठीक है, ensconce मतलब comfortably, बहुत safely एक जगह पर आपका सेटल हो जाना, दैट इज़ योर एस्कॉन्स. ओके,
So yeah, this was about today's current affairs, and I will see you next with another video tomorrow. Thank you for watching. Bye.